Like the Pahalgam-Style attack that earlier shook concerns over identity-based targeting, a similar sense of unease has now gripped Mumbai after a violent early morning assault yesterday in Mira Road left two security guards seriously injured and triggered a full-scale terror-linked investigation. Well, what began as a routine night shift at an under-construction site in Naya Nagar quickly turned into something far more disturbing. Rajkumar Mishra and Subroto Sen were on duty when a man later identified as Zeb Zubair Ansari entered the premises and approached them. At first, the interaction seemed normal. He spoke to them, asked their names and blended into the quiet of the site. But investigators say that the tone of the conversation shifted sharply. The accused allegedly began questioning their religion. He reportedly pressed them further, asking whether they could recite the Islamic Kalma. And when they failed to respond as expected, a knife was pulled out and both the guards were attacked in a sudden burst of violence that left them bleeding inside the premises. Rajkumar Mishra sustained serious injuries while Subroto Sen was also wounded but managed to survive and later alert authorities. His statement became one of the first crucial pieces in reconstructing the sequence of events. As the news broke, police moved quickly, scanning CCTV footage from nearby areas, and within a short time, the suspect was traced and arrested near his residence in Mira Road. What initially looked like a straightforward assault case soon began to raise deeper questions for investigators, as officials say early findings suggest that the victims may have been specifically profiled before the attack, raising concerns of ideological motivation. The case was soon handed over to the Maharashtra Anti-Terrorism Squad, which stepped in to examine whether the accused had been influenced by extremist content circulating online. Investigators are now looking closely at his digital footprint, including activity on encrypted platforms where radical material is suspected to be shared. While no direct link to any organized terror group has been confirmed, reports say that the nature of the content being examined includes references to extremist narratives and global conflict zones. Searches at his residence have also led to the recovery of electronic devices and handwritten notes, now undergoing forensic analysis. Authorities are trying to understand whether these reflect personal ideology, online influence, or something more structured behind the attack. Zeb Zubair Ansari is believed to have lived alone in the Mira Road area for several years. He reportedly studied in the United States before returning to India in 2019 and was said to be conducting online educational sessions for a living. And as investigators piece together his recent movements and online activity, one question continues to dominate the probe: whether this was an isolated act of sudden violence or part of a growing pattern of self-radicalized individuals acting alone but driven by extremist propaganda. Meanwhile, both the injured guards remain under treatment and security agencies have tightened vigilance in the area. And much like the concerns that surfaced after the Pahalgam terror attack, this case has once again raised difficult questions about how ideology, identity, and online radicalization can collide in unpredictable and violent ways, leaving behind fear long after the attack is over. आपको जानकारी आपकी बिल्कुल नहीं सर, मुझे उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, ना मेरा उनसे या उनके घर से या किसी से कोई लेना देना है, किसी से कोई सलाम कलाम नहीं। मैं सिर्फ सेक्रेटरी जानता, मुझे 5-6 महीना हुआ है यहाँ आए हुए और मेरा किसी से साथ कोई वो नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ यहाँ पे। कभी आपने उनको देखा भी नहीं? नहीं, मैं ऐसे सामने हो जाए तो पहचानूंगा भी नहीं है। अगर वो सामने आप खड़ा भी कर दें कि ये जुबैर है तो मुझे नहीं पता कि कौन है वो, मैंने कभी नहीं देखा। कल जिस तरह से हादसा हुआ, फिर पुलिस आई थी, आपने गाड़ी भी देखी होगी जी, कोशिश की जानने की क्या? हाँ, पूछा मैंने तो लोग पुलिस वाले जो थे उन्होंने बताया कि कुछ हुआ है यहाँ पे। मैंने कहा क्या हुआ है, तो बोले कि कुछ हुआ है, इन्होंने किसी को मारा है, वॉचमैन को, बोले ऐसा मारा है उन्होंने। बस इतना उन्होंने पुलिस वालों ने बताया। बाकी नीचे मैंने वॉचमैन से पूछा तो उसने बोला मुझे पता नहीं कुछ हुआ है, मगर कुछ हुआ है। तो ये घर मालिक थे या फिर वो भी नहीं पता मुझे वो भी नहीं पता कि वो मालिक थे कि भाड़े थे। बताया ना, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं। मैं यहाँ से जाता हूँ अपने काम पे, वापस आया घर में, मैं नीचे बैठना नहीं, ना किसी से कोई लेना देना है। शुक्रिया। आप अपना नाम बता दीजिए मुझे। इंद्रजीत जी, यहाँ पर आप काम कर रहे हैं सिक्योरिटी के तौर पे। हाँ, बीती रात को यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ, 2 आपके ही सहयोगी गार्ड थे जिनके ऊपर जुबैर नाम के एक व्यक्ति ने हमला किया। क्या कुछ आपने देखा था और क्या वो लड़का कैसा था दिखने में? अब देखो सर, मैं नाइट में हूँ नहीं तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं डे में हूँ। जी, तो मैंने आया तो पता चला कि ऐसा काम हुआ है। तो
आपने कभी उस लड़के को देखा है? ये यहीं आपके तीसरे माले पे रहता है इसी इमारत में? हाँ तो यहाँ रहता था, उसको मालूम है कि यहाँ रहता है। तो ऐसा लग रहा था कि इस तरह की हरकत वो करेगा? बॉडी लैंग्वेज उसका कैसा था? नहीं, वो सब तो नहीं। बातचीत में कैसा था? कभी बातचीत कभी नहीं किया है। तो वो अधिकतर रात में ही बाहर निकलता था क्या? क्योंकि उनके पड़ोसी बोल रहे हैं कि वो जानते तक नहीं यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है करके। देखो सर, मैं रात में रहता नहीं हूँ तो हम क्या जाने। तो दिन में आपने कभी नहीं देखा उनको? दिन में 10 बजे जाता था ड्यूटी पे अपने। अच्छा, उसके बाद अब आगे क्या बताएं। तो कल पुलिस यहाँ पर आई, पुलिस ने आपसे बातचीत की, कुछ जानकारी ली? बस यही जानकारी ली, जितना दिन का है उतना मैं बता दिया। इसके बाद अब आगे क्या बताएंगे। That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.